नया दिन और हम निकल चुके हैं फिर पहाड़ों में। आज के सफ़र में सबसे पहला जो स्टॉप हम लेंगे वो है खारदुंगला पास, और खारदुंगला पास के बाद नुब्रा वैली जाएंगे। मौसम काफ़ी ठंडा और बर्फ़ भी गिर रही है, बीच में स्नोफॉल हो रहा था, काफ़ी लाइट स्नोफॉल था। अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा ऊपर जाके हमें अच्छा स्नोफॉल देखने को मिलेगा। And here comes the mighty Khardungla. So I am at the Khardungla at an height of 17,982 feet. काफ़ी ठंड और बहुत ज़्यादा भीड़। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब इतनी भीड़ नहीं थी। और इधर लेफ्ट में जो एक खाली जगह है, यहाँ पर एक बोर्ड था बट जो अभी उन्होंने हटा दिया है, तो अभी सिर्फ एक ही बोर्ड है और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बाइक्स खड़ी हैं। I think I should also go and take a few pictures. काफ़ी टाइम लगेगा नंबर आने में but you can't help. So let's go. Let's wait for the turn और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। काफ़ी पिक्चर्स ले ली हैं, स्नोफॉल भी देख लिया। Now it's time to go to Nubra. So here we go. We are going down from Khardungla towards Nubra Valley. Never ever pay for water. Bottle नहीं खरीदो. Carry your own bottle. There are so many streams flowing. Clear water, mineral water. Just fill your bottle. Let's see the altitude. Okay, it's 4,655 meters and we are 17 kilometers from the Khardung village. So Khardungla से नीचे उतर के North Kulu, and now North Kulu से we will go to Khardung village.
Okay guys, this tiny village, this is known as Khardungla, sorry Khardung, lies the pass, and this is the Khardung village, and we are in the Khardung village. Quite small, we can count the number of house. इधर थोड़ी खेती भी हो रही है. अगला स्टॉप है खालसर में, वहाँ से रास्ता पैंगोंग और नुब्रा को अलग होता है. 23 किलोमीटर रास्ता एकदम चुपका. I think we'll reach in another 30 minutes. Take a shortcut. रिवर के साथ मैं चलता जा रहा हूँ नुब्रा रिवर की ओर, और कुछ ही समय में नुब्रा वैली स्टार्ट हो जाएगी. इधर से दे विल बी अ टी पॉइंट जहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है, और उसके बाद अगली जो डेस्टिनेशन इज स्टिल हुंडर इन नुब्रा वैली, बट जो अगला स्टॉप होगा दैट वुड बी दिस्कित गोपा, जहाँ पर बुद्धा की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई है. और यहाँ पर मैं खलसर में रुका 15 मिनट के लिए. आई हैड मैगी, थोड़ा पानी पिया, पानी रीफिल किया, एंड नाउ बैक. यहाँ पर काफ़ी सुंदर सैंड ड्यून्स हैं. आई थिंक आई शुड टेक अ फोटो. रुकते हैं. स्टॉप द बाइक.
it's the time to call it a day. It was a fun day. बहुत मज़ा आया राइड करने में. काफ़ी अलग लैंडस्केप्स थे नूब्रा वैली और खारदुंगला साइड. आई मीन सोमोरीरी और ले सिटी से थोड़ा अलग. नाउ आई एम हेडिंग बैक टू माई स्टे विच इज़ B2 गेस्ट हाउस. एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था. आई एम गेटिंग लाइक meals that includes evening snack, dinner, and then सुबह breakfast और टी और जो भी like I had ginger lemon honey, ये सब include करके it is just 1000 rupees. So got a good deal. Now heading to the guest house. I'll sleep and will do the hustle again tomorrow. So till then, thanks for watching. If you like it, then hit the like button. अगर पसंद नहीं आई, feel free to dislike, and yeah, comment your thoughts. Thank you.